اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, hope you all are doing well. I am your ma'am Hamida Akhtar from UPS Bhagatpura. Welcome you all in my today's video lecture. Dear students, today I will teach you a topic from class 6th English. The topic is a short story, The Friendly Mongoose. Dear students, let's open your books and start reading the topic. The Friendly Mongoose. बच्चों, friendly mongoose, mongoose means नेवला. नेवला जो दोस्ताना ताल्लुक रखता था. A farmer, his wife and their small children lived in a village. एक जो ये ज़मींदार था, फार्मर, और उसकी बीवी और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था. ये कहाँ एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. बच्चों, उनके पास और एक बेबी मंगूस था, नेवला का बच्चा भी उस घर में रहता था. जो वो सोच रहे थे, वो इस पे भरोसा कर रहे थे कि जब आने वाले दिन होंगे या उनके बच्चे के लिए दोस्त साबित होगा. ये उसको कंपनी देगा, ये उसके लिए इन फ्यूचर उसका दोस्त बनेगा. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दफ़ा क्या हुआ, जो ये फार्मर था, ये ज़मींदार था और उसकी बीवी थी, ये इन्होंने घर छोड़ा, ये कहीं बाहर गए और इस बच्चे को अकेले इस मंगूस, इस नेवले बच्चे के पास रखा. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. बच्चों, एक दफ़ा की बात है कि एक ज़मींदार और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था. They loved him very much. वो उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एक पालतू चाहिए घर में, जो इन फ्यूचर जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक कंपनी की ज़रूरत होगी, उसको एक कंपेनियन चाहिए ताकि वो पेट उसका कंपेनियन बने. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. फार्मर ने जो इसको ये आइडिया दिया कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको एक साथी की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको हम एक पेट लाएंगे जो उसका दूर जाके उसका साथी बनेगा. जो इसकी ये बीवी है बच्चों, इसको ये इसका आइडिया बहुत पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दफ़ा शाम को इस जो ये ज़मींदार था, इसने अपने साथ एक छोटा नेवला लाया. It is a baby mongoose. ये नेवले का छोटा बच्चा था, said his wife. उसकी बीवी ने कहा. But will soon be fully grown. लेकिन ये अब जल्दी बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. ये हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा. Both the baby and the mongoose grew. बच्चा भी और ये जो नेवले का बच्चा था, ये दोनों अब grown up होने लगे, ये बढ़ने लगे. In 5 or 6 months, the mongoose had grown into its full size. बच्चों, 4-5 महीने के बाद क्या हुआ, जो ये बेबी मंगूस था ये अब बड़ा हो गया, इसका साइज़ अब फुल हो गया, बड़ा मंगूस बन गया. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. बच्चों, ये बहुत खूबसूरत जानवर इनको दिखाई दिया. ये इसकी जो आइज़ थी, इसकी आँखें थी, ब्लैक शाइनिंग थी और इसके पास एक लंबी सी दुम भी थी, बुशी टेल, इसके पास एक लंबी दुम थी. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. लेकिन फार्मर का जो बच्चा था वो अभी भी छोटा था. वो अपने उस कैडल, जो एक किस्म का जो ये होता है बेड, एक किस्म का जिस पे बच्चों का जो बेड होता है जिस पे बच्चे सोते हैं, उसमें ये सोता था और सोता भी था और रोता भी था. अल्टरनेटली पहले सोता था, फिर रोता था, फिर और सोता था, फिर रोता था. यही अभी छोटा बच्चा ही था. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and
rocked him to sleep in his little cattle. ایک دفعہ جو یہ زمیندار کی وائف تھی ان کو مارکیٹ جانا پڑا. وہ چاہتی تھی کہ میں جاؤں گی بازار. she fed the baby and rocked him to sleep in his. اس نے اپنے بچے کو کھلایا پلایا, دودھ پلایا اور اس کو نیند پڑ گئی اور اس کو اس کیڈل بیڈ میں ڈالا. Picking up the basket, she said to her husband. اس نے باسکٹ اپنے ہاتھ میں اٹھایا, ٹوکری, اور اپنے ہسبینڈ اور اپنے خاوند سے کہنے لگی, I am off to the bazaar. میں بازار جا رہی ہوں. The baby is sleeping. بچہ سو رہا ہے. Keep eyes on him. آپ اسی پہ اس کو نظر رکھنا. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. میں سچی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچے کو اس مانگوس چھوٹے بچے کے نیولے کے بچے کے پاس اکیلا نہیں ڈالنا چاہتی ہوں. The wife went away and the farmer having nothing to do to the house. جب یوں ہی وائف نکل گئی تو جو یہ زمیندار تھا اس کو گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا. he decided to go out and take a look at his fields not far away. اس نے کیا کیا اس نے چاہا کہ میں اب باہر نکلوں, جو ان کا فیلڈ باہر تھا, زمین تھا, میں اسی کو نظر دوں. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. اس نے کیا کیا, جو ہی وہ نکل گیا راستے میں اپنے دوستوں سے ملا اور اس کو وہ اپنے ٹائم پہ واپس نہیں آیا, اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا. بچوں, امید ہے کہ اتنا جو ٹاپک ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ شارٹ سٹوری کا جو یہ آدھا حصہ ہے. باقی وسلام.